The next one is alternative sign for H. Fine. So the upward form of H is most commonly used. ऐसे हमने देखा था कि H जो है वो भी हम डाउनवर्ड एंड अपवर्ड यूज़ करते हैं. तो जो हमारा अपवर्ड फॉर्म होता है इसे हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं. एंड डाउनवर्ड फॉर्म को भी लिखा जाता है जब वो स्टैंड अलोन होता है. स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि जब वो अकेले हो. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल हे. तो हमने क्या किया, डाउनवर्ड बनाया और ये वोवेल लगा दिया, तो इट्स हे. फाइन. तो अब डाउनवर्ड जो एच होता है इट इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय के एंड के. क्या समझे हम कि जब डाउनवर्ड एच का हम तब यूज़ करते हैं जब एक तो वो अकेले स्टैंड करता हो, ठीक है, उसके साथ कोई और स्ट्रोक ना हो, या फिर वो के और गे के साथ हो, टू मेक दी स्ट्रोक्स कन्वीनियंट, टू मेक दी वर्ड कन्वीनियंट, ताकि हमारा हाथ ईजिली हम उसको बना सकें. तो जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हेक. सो इट्स एच डाउनवर्ड एंड के and vowel. And Haig, like maybe the name of some person. So it's Hey and K and like this. Sorry, it's beyond line, okay? So it's like this. So it's Haig. Fine. Now these are some examples like hope, happy, heavy, hawk, hang, hook, hog, health, hedge, hood, hedge. Just make sure about the vowel sounds and इनमें हमने कौन से एच का कहाँ यहाँ पे डाउनवर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे हमने अपवर्ड यूज़ किया है. तो इस तरीके से हम एच को यूज़ करते हैं. फाइन. नाउ एज आई टोल्ड यू इन लास्ट सेशन दैट व्हाट इज़ ग्रामोलॉग्स, और हम हर सेशन में जितने ग्रामोलॉग्स हो सकते हैं उतने करेंगे. सो इसमें हम देखते हैं वन बाय वन. दैट इज़ पुट. पुट जो होता है वो लाइट बनता है एंड थ्रू द लाइन बनता है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बी, बी इज़ डार्क एंड ऑन द लाइन बट स्टिल्ट. फाइन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू बी, तो ये थ्रू द लाइन बनता है बट डार्क बनता है. इसमें बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए इन्हें हमें याद करने की ज़रूरत होती है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इट, so if I'm talking about it, तो it's light and on the line like this, जैसे हम टी बनाते हैं. फाइन. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हैड, तो हैड जो होता है लाइन के ऊपर बनता है एंड डार्क बनता है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट डू, तो इट्स ऑन द लाइन एंड डार्क. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंस एंड डिफरेंट. ओके. कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं जैसे डिफरेंस है, डिफरेंट है, तो ऐसे जो ग्रामोलॉग्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, जो ग्रामोलॉग्स होते हैं ये सेम बनते हैं. जैसे हम डिफरेंस और डिफरेंट के लिए सेम ग्रामोलॉग्स का यूज़ करते हैं, बट ये हमें ध्यान रखना होता है कि हम उनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें. जैसे इनके बीच में तो क्या होता है, सी ऐसा बनता है. बट डिफरेंस में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो यूज़ किया था वो मैं ऐसे, आप अपने तौर पे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कैसे भी. बट आई यूज़ टू राइट डिफरेंस लाइक दिस. I just make a small point here to understand like it's S, so difference and it's different. तो इन दोनों के बीच में अगर आप चाहें तो इसमें आप differentiate कर सकते हैं. Then next is much. Much is quite tilt and above the line, and which is tilt but it's on the line. Fine. Now let's take the examples, sentences. First is repair, repair. It's repair of the road to the ferry
should make a difference. Fine. The second one is, now next is, which of the two, comma, do they say should put up the fourth pillar? And question mark. The third one is, he ought to be fair. Fine. So for he we use this, he ought to be fair. He ought to be fair and pay the difference to Reed and Hannah. To Reed and, so Reed and Hannah may be the name. Okay, Hannah. Last one is, if they get the money, fine, money, it should make much difference to the firm. So these are some examples.